बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। चीनी दा concludere la programma जी। आखिरी सवाल हम करते हैं अपने वकील साहब से। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी अपने अख्ताम को जा रहा है। बहुत जल्द अहम इंपॉर्टेंट हमने कोशिश की कि आप तक पहुंचाने की। अगर किसी के पास अजीलो पॉलिटिको का या किसी भी किस्म की अजील का केस है और उसका रिजेक्ट हो गया है तो उसे क्या करना होगा? क्या वो वही केस अपना जारी रखे या उसे वो केस खत्म कर देना होगा? ये जो सवाल है ये करते हैं अपने वकील साहब से। Allora, la domanda è: cosa fare nel caso in cui chi ha fatto domanda è un richiedente e asilo, la pendenza del ricorso rinuncia o continuare? Allora, il discorso è, in questo caso è importante sottolineare un aspetto, cioè chi ha fatto la domanda di sanatoria e risulta avere un ricorso in corso, quindi ancora se in commissione, se eventualmente in tribunale oppure potrebbe essere in Cassazione, chiaramente il discorso è questo, che non bisogna rinunciare al ricorso per asilo. Perché non bisogna rinunciare al ricorso per asilo? Perché la legge lo ha specificato, ha detto precisamente che le persone che hanno fatto una domanda di sanatoria e sono richiedenti asilo possono tenere in piedi entrambe le strade, cioè non devono rinunciare all'asilo. Ma perché non devono rinunciare all'asilo? Perché potrebbe anche essere che nel caso in fase di ricorso eventualmente a queste persone venga riconosciuto un permesso per protezione internazionale. Ed è chiaro che in questo caso eventualmente loro potrebbero decidere benissimo se eventualmente optare per una o per l'altra situazione. Quindi non devono assolutamente, e lo ripeto, non devono assolutamente rinunciare all'asilo politico, perché potrebbero eventualmente tenere in piedi anche ed entrambe le situazioni. Questo è importante. Anche se passa la sua domanda di sanatoria, allora devono lasciare uno. Anche se la sanatoria è accolta. Possono ritirare permesso di soggiorno avendo anche asilo politico? Possono ritirare il permesso di soggiorno pur avendo ancora in corso l'asilo politico. Ho capito. जी वकील साहब का ये कहना। Malik, guarda, sì. Mi devo assentare solo un secondo e arrivo immediatamente. Ok, puoi sentire, sì, puoi sentire. Adesso arrivo subito, tu intanto continua. Puoi chiudere il suo microfono, sentire anche telefono, non c'è problema. Sì. स्टारे ली जी। वकील साहब का ये कहना है, अभी आते हैं वापस, कि अगर किसी का अजील का केस है, जो उसकी अजीलो पॉलिटिको चल रही है, साइलम वाला केस चल रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये जरूरी नहीं कि आप रिनुचारे करें, अजील छोड़ें। जब तक आपको परमेसो दी सजोर्नो इमिग्रेशन वाली नहीं मिल जाती, आप अपनी अजील वाली परमेसो दी सजोर्नो कंटिन्यू कर सकते हैं, रख सकते हैं। कमीशन जाकर अगर किसी का आया है तो दे सकते हैं। अगर किसी की अजील की सजोर खत्म हो रही है तो वो रिन्यू भी करवा सकते हैं। इस किस्म का कोई कानून नहीं है कि आपको अजील पहले छोड़नी होगी जब तक आपके हाथ में इमिग्रेशन की परमेसो दी सजोर्नो नहीं आ जाती, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर आपके पास दूसरी इमिग्रेशन की सजोर्नो पास हो गई है, उस वक्त आप एक रख सकते हैं, दोनों में से अजीलो वाली छोड़ सकते हैं, या अजीलो वाली पास होगी है तो इमिग्रेशन वाली छोड़ सकते हैं, अजीलो वाली रख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी रखना चाहते हैं। लेकिन आपको इसके लिए किसी किस्म का कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई कर सकता, या कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ये छोड़ देनी है पहले और फिर जाके इमिग्रेशन आपने कंटिन्यू करनी है। आप अजील वाली भी रख सकते हैं, रिन्यू भी करवा सकते हैं, उस पे काम का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 4 घंटे का अलहदा, और उसके बाद जब आपको इमिग्रेशन की सजोर्नो तैयार होगी, मिलेगी, जब वो कहेंगे आके रितीरा कर लें, उस वक्त आप रिन्यू चारे कर सकते हैं। तो वकील साहब आ चुके हैं हमारे साथ।
तो हम बात करते हैं, क्योंकि वो आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाह रहे थे आपसे और वो बहुत जरूरी है। वो मैं उनसे दरखास्त करता हूं, अभी तक के ये मेन सवाल थे जो आपके लिए हैं. Signora Maurizio, volevi dire una cosa importante fine a tutti i miei paesani connazionali che capiscono a lingua Urdu o di Bangladesh o di India o di Pakistan, tutti, ultima cosa importante per avvocati secondo me, giusto? Sì. Ecco, allora il discorso è questo. Allora fate attenzione alle persone a cui vi affidate. Mi spiego meglio. Anche gli avvocati, come i medici, hanno delle specializzazioni particolari, nel senso che gli avvocati, ci sono avvocati che si occupano di divorzi, avvocati che si occupano di diritto di famiglia, avvocati che si occupano di fallimenti societari. Poi ci sono avvocati che invece sono specializzati in diritto dell'immigrazione. È importante questo aspetto, fate attenzione e molto attenzione alle persone a cui vi affidate, perché ne va di mezzo la vostra vita. Cioè, se voi vi affidate a persone che chiaramente con l'immigrazione non hanno nulla a che fare, tante volte e spesso succede che anziché risolvere i problemi li aggravano ulteriormente. Questa è una cosa importantissima e che ci tenevo sostanzialmente a sottolineare, perché nel diritto dell'immigrazione è un diritto molto complesso che abbraccia tantissimi rami del diritto, dal diritto costituzionale al diritto comunitario, al diritto civile, al diritto penale, e deve essere chiaramente una materia che deve essere conosciuta a 360 gradi. Quindi fate attenzione alle persone di cui vi affidate, a cui vi affidate. Questo non è che voglio dire che io sono l'avvocato più grande del mondo, però sono sicuro sostanzialmente che io la materia la conosco. Sono oramai diversi anni che mi occupo di diritto dell'immigrazione e quindi so sostanzialmente quali sono le problematiche connesse a questo discorso. E ripeto, fate attenzione a chi date in mano la vostra vita. Ecco. Giusto, un importante messaggio finale. मेरे भाइयों, जो भी मेरी जुबान समझ रहे हैं, वकील साहब का ये कहना है कि खुदारा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमिग्रेशन का वकील हूं, मैं मॉरिसियो इमिग्रेशन को डील करता हूं या मैं इटली का सबसे बड़ा वकील हूं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूं, जिस तरह डॉक्टर हर मर्ज का स्पेशलिस्ट होता है, कोई मेदे का स्पेशलिस्ट है, कोई सर्जरी का स्पेशलिस्ट है, कोई जो है वो ब्लड प्रेशर का स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डी जोड़ का स्पेशलिस्ट है, इस तरह इटली में हर वकील अपने शोबे का स्पेशलिस्ट है। कोई फैमिली केसेस का स्पेशलिस्ट है, कोई जो फैक्ट्रियों का दिवालिया निकल जाता है वो भी वकील है, लेकिन वो सिर्फ उनका स्पेशलिस्ट है। कोई वकील जो है वो किसी और चीज में स्पेशलिस्ट है, लेकिन इमिग्रेशन का वकील जो है वो सिर्फ इमिग्रेशन को ही डील करता है। खुदारा आपसे गुजारिश है, मैं अपनी तरफ से ये कहता हूं, हम जो पाकिस्तान में छोड़ के आए हैं, जो इंडिया में छोड़ के आए, एक जैसा है, जो बांग्लादेश में छोड़ के आए वो भी एक जैसा है। मैं हाथ बांध के कुछ चंद अच्छे वकीलों से माजरत करते हुए, सारा निजाम ही वकालत का पाकिस्तान में खराब हुआ है। मैं खुद जानता हूं, मेरे बहुत सारे वकील हैं। आप किसी शहर में किसी अदालत में चले जाएं, वकीलों के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, दफ्तर बने हुए हैं, और इल्ला माशाल्लाह हर वकील हर एक शोबा को डील कर रहा है। आप जाते हैं, जनाब ये वकील साहब, इनका बड़ा नाम है, और ये आप क्या करते हैं, जो भी केस आता है, चोरी का आता है, फ्रॉड का आता है, फैमिली का आता है, उसके तलाक का आता है, हर एक केस एक वकील को आप दे देते हैं। तो ये बात इटली में नहीं है। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं, खुदारा हर वकील को अवोकातो समझ के ना, उसके बाहर जो पट्टी लिखी है, पट्टी लिखी दफ्तर पे, अवोकातो, अंदरे अवोकातो, जुसेप्पे अवोकातो, फलाना ढिंगड़ा, हर अवोकातो ही है। लेकिन इमिग्रेशन का वकील जो है वो इमिग्रेशन को सिर्फ डील करता है। इटली में ना पाकिस्तान है, ना इंडिया है, ना बांग्लादेश है। इटली में हर वकील अपना स्पेशलिस्ट है। तो आप अपनी जिंदगी जो है, आप अपनी जिंदगी का जो सरमाया है, आपके कागज जो है, वो एक आप तलाक वाले फैमिली वाले वकील को जाके दे देंगे,
اور وکیل صاحب موریزیو کا کہنا ہے کہ جب میرے پاس کیس آتے ہیں ان وکیلوں کو صحیح کرنے کی بجائے وہ وکیل اور خراب کر دیتے ہیں کیس کو. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. آج وکیل صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ پروگرام ہو یا نہ ہو, خدا کے لیے اپنی قوم کو یہ سمجھاؤ کہ جو وکیل ہے اٹلی میں وہ ہر ایک شعبے کا اپنا علیحدہ وکیل ہے. یہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کو اٹھاؤ ہر بندے کو کیس پکڑا دو. کیوں؟ اس کے باہر نام کے ساتھ اووکاتو لکھا ہوا ہے. میرے ایسے بھی بھائی ہیں, میں نے ان کے موبائل میں دیکھا, فون میں, جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا بندے, یا جن کے کاف کے دفتر ہیں, ان کے نام کے ساتھ بھی بھائیوں نے موبائل میں اووکاتو لکھا ہوتا ہے. وہ خدا کے لیے بھائی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے. اگر آپ کسی اٹالین وکیل کے پاس جا رہے ہیں نا, میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آخری الفاظ میں, پروگرام بہت لمبا ہو گیا. لکھیں اووکاتو موریسیو نردوسا, گوگل لکھیں, گوگل آپ کو بتا دے گا کہ یہ اووکاتو کس چیز کا ہے. giusto avvocato? Se volete capire che questo avvocato cosa si tratta, allora andate a scrivere suo nome, cognome, ufficio, indirizzo e Google dice cosa si tratta questo. Scusami perché questo è un mio dolore dal cuore, i miei paesani, poverini, non hanno studiato, loro vedono solo nome avvocato, basta, e loro fregano. میں ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں. بریشیا میں ایک وکیل تھا, اس کا نام تھا مارکو, وہ چینترو والی سائڈ پہ جاتا تھا. میں ایک بھائی کے ساتھ, آج سے بہت سالوں پہلے کی بات ہے, میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا چلوں, میں اس کے ساتھ گیا, کیس جا کے اس کو دیا. اس کو فولیو دی ویا ملا تھا, انڈیا کا ہوا تھا وہ لڑکا, میرے ساتھ وہ جاب کرتا تھا. میں نے اس کو کیس دیا, اس نے 300 یورو لے لیا, اور اس کو بعد میں پولیس نے پکڑا. اس وکیل صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس کو انڈیا پھینک دیا پولیس نے. تو وہ بعد میں پتا کیا وہ وکیل امیگریشن کا تھا ہی نہیں, وہ 300 بھی کھا گیا, بندہ بھی انڈیا چلا گیا. وہ خدا کے لیے کچھ خوف کریں, اصل وکیل دیکھیں جو صرف امیگریشن کو ڈیل کرتا ہے, مختصر الفاظ میں. بہت معذرت اگر میں کچھ ہائپر ہو گیا ہوں, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ میرے بھائی ہیں, آپ میری قوم ہیں, آپ میرے زبان سمجھنے والے ہیں, اور میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ تک حق سچ کی جو بات ہے وہ لے کے آؤں. جب تک میرے میں سانس ہے میں انشاءاللہ حق سچ کی بات آپ تک لاتا رہوں گا, چاہے کوئی اٹالین وکیل ہے, چاہے کوئی چودھری ہے, چاہے کوئی نواب ہے. جو سچا ہے اس کو سچا کہوں گا, جو غلط ہے اس کو منہ پہ غلط کہوں گا. یہ میرا جو ہے شیوا ہے, اور یہ میرے قائد کا حکم ہے. تو بہت شکریہ آج کے پروگرام کا. آج کا پروگرام ہم یہاں پر کلوز کریں گے. Dottore Avvocato, signor Maurizio, lo ringrazio tantissimo, hai dato suo caro tempo a noi tutti paesani, e sinceramente lo ringraziamo tutti che hai dato un bel messaggio finale. Sinceramente sono contento. A me è sempre un piacere essere in tua compagnia, lo sai, ho un grande rispetto di te e della persona che sei. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie mille. سب بھائیوں کو اگلے کسی نئے پروگرام تک, نئی ویڈیو تک اجازت دیں. اپنے میزبان شاہد ملک کو, اپنے گھر والوں کا, اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں. جہاں تک ہو سکے اپنے بھائیوں کی مدد کریں, ان کو اچھا مشورہ دیں, نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بنے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. فی امان اللہ. اللہ